inheritance in the way you can inherit a new class from the existing class. So there are different types of inheritance which we will be learning in the next presentation. Single inheritance, one base class, one derived class. Multiple inheritance, new class derived from two or more than that base class. Multi-level inheritance, when there is a level by level inheriting of new classes from A to B, B to C, C to D, and so on. Hierarchical inheritance, from one base class, if you are inheriting multiple classes, child classes, then it is hierarchical. Hybrid inheritance, combination of any of these single, multiple, hierarchical, multi-level is can be called as hybrid inheritance. As you can see in this diagram, this is the combination of hierarchical inheritance and multiple inheritance. When you are defining or deriving a new class, you have to use this syntax where you will be writing the old class name, that is base class name, and the new class name. And here you have to specify the visibility mode, or which is also known as access specifier, in which mode you are deriving a new class from the base class. As you can see here, the example, the three basic visibility modes that we'll be using are public, private, and protected. Here you can see the examples. Class A, B, C derived publicly from XYZ. Class A, B, C derived privately from base class XYZ. This is how you read it. Next, we learned the concept of protected members. What are the protected members? They are just made for the purpose of making private member inheritable. As we know, private members can't be inherited. We having the new visibility mode as protected, which are providing or permitting their access only up to the class immediately derived from the base class, and also member functions within its own class. So you must remember the meaning of protected members. Here you can have a quick look of the all members that exist in class: private members, protected members, public members. And here it is written to whom they are accessible. Diagrammatically depicted in this circular rings. Okay, so the innermost private members are accessible to, here you can see the arrow intercepting own member functions, friendly functions, and classes. Protected members are accessible to own member functions, friendly functions, and classes, along with that derived class member function. Public members are accessible to own member functions, friendly functions, and classes, derived class member functions, and all the users. This diagram is again showing the access mechanism of the class. As you can see here, there is a class X, class Y, which is friend of the class X, and one class inherited from the class X, that is class Z. So here also the same things are given, which data is accessible to exactly which members. Okay, so as you can see, the private data of the class X, it is accessible to, you can these arrows will help you to find out to whom they are accessible. Okay, so private data is accessible to, look at these arrows, fy1, fy2, these are the functions of the class Y member functions, so they are accessible to the class Y's friend function, which is friend of class X. Okay, since this is X and Y both are friends, so private data is accessible to the functions, member functions of the class Y also. Okay, then you can see this arrow. Suppose this is another friend function, separate friend function added into this class, then this private data can also be accessed by this function. The private data is also accessible to the member function of own class, means class X के खुद के member function fx1, fx2. As you can see here, the class Z, which is inherited from the class X, okay, so
क्लास Z के जो member function है fz1 and fz2 can access the private data but not directly. They have to go via fx1. So fx1 and fx2 are accessible to the member functions of class Z, that is fz1 and fz2, and these member functions can access then indirectly private data but via this if they want to access. Let us look at the protected data of the class X. Protected data from the class X can be accessed by the friend class member function. Who is friend of class X? Class Y. So fy1 and fy2 can access the protected data of the class X. The friend function can also access the protected data of class X. As you can see, the member functions of the inherited class, that is class Z, can also access the protected data of the class X. Okay. So these member functions can also access the protected data. The friend function can access it, and class Y ke friend member functions can access the protected data. So this diagram is also showing in brief what is the access mechanism. This thing is a must for you to understand the visibility modes. Three visibility modes we have studied: private, public, protected. These three visibility modes will specify in which mode you can derive a new class from the existing class. So basically you must understand this thing first, that private members कभी भी inherit नहीं होते, किसी भी mode में उनको आप derive करो, नई class बनाओ. Private members कभी share नहीं होते, ना inherit होते हैं, नई class में नहीं जाते हैं वो. In the new class they don't go or they don't provide any access to the new class because they are private or the private members of the previous class, the base class. So it doesn't give access even to the child. Okay. What can be inherited are protected members and public members from the base class. This table we have already learned. We can revise that table with the help of this diagram where you can see, am I audible? Yes, Okay. ma'am. Yes, ma'am. Okay. Here you can see the class B. What we will do, we will inherit some classes from this class in the public, private and protected mode. And let us see their behavior. देखो, अगर हम एक बेस क्लास से नई क्लास इनहेरिट करते हैं तो ये जो मेंबर्स होते हैं उस क्लास के, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, ये जरूरी नहीं कि प्राइवेट भी आगे चल के प्राइवेट ही रहेगा, प्रोटेक्टेड आगे चल के प्रोटेक्टेड ही रहेगा, या पब्लिक पब्लिक ही रहेगा. ऐसे नहीं होता है. डिपेंडिंग ऑन द डेरिवेशन मोड, public, private, or protected you are using to inherit a new class, the behavior of the base class members changes. Okay. So private members become something else, protected members become something else, and public members also changes their behavior. So depending on the mode of derivation, and that is given in this table. But let us revise that table with the help of this diagram. As you can see, I am having class B. I will inherit two new classes from the class B. Class D1 publicly inherited from class B. Class D2 privately inherited from class B. Let us look at how the behavior of members of class B changes when we are inheriting a new class D1 publicly. Now see, what will happen to each and every member that we will see for the class B. Class B के जो private members है वो inherit नहीं होते. What happens to the protected members? Protected members, they become, see this arrow? Can you see this arrow? Protected members, they become the protected members in the new class D1. Why? Because you are using public mode. और आपने ये टेबल पढ़ा है कि अगर पब्लिक मोड में आप इनहेरिट करते हो तो protected members become protected members. Okay. The same thing is happening here. Protected members, they become protected members of the new class because mode of derivation is public. What happens to the public members of the base class B? So public members of the base class B,
they become public members of the derived class D1. Okay, let us look at the private mode of derivation. Class D2 is privately inherited from class B. What happens to each and every member of class B then? Private members of the class B, they are not inherited. Protected members of the class B, they become private members of the class D2 because you are this time using the derivation mode of private, and hence this behavior is changing like this. So protected members become private members. The public members of the class B, they become private members of the class D2. So as you can see, if we are using private mode of derivation, protected and public members, they become private. Okay, everything gets become private member. Now let us use the concept of multiple inheritance. From the two classes D1 and D2, we will inherit a new class X. Then what happens to the private protected public members of D1 and what happens to the private protected public members of D2? Let us have a look at the class X. First, we will see what happens to the members of class D1. Since class X is derived publicly from D1 and protected mode में from D2. Okay, so the behavior will change as per the derivation mode. Class X derived public mode from D1. So private members not inherited. Protected members of the class D1, they become protected members of the class X. Public members of the class D1, they become public members of the class X. Let us look at this. Since class X is inherited in a protected mode from D2, ठीक है, इन दोनों से inherit की हुई है वो, तो दोनों के members का behavior as per their mode of derivation change होगा उस class में. So what happens to the private protected public members of class D2? Let us have a look. Private members of class D2 not inherited. Protected members of class D2, they become protected members of the class X. And public members of the class D2, they also become the protected members of the class X because mode of derivation is protected from D2. So this diagram is simply showing you how this table is implemented. Let us have a look at some programs. Okay, see, private mode of derivation. In private inheritance, protected and public members क्या बन जाते हैं बेस क्लास के, आगे चल के प्राइवेट मेंबर्स बन जाते हैं. Okay, in the derived class. This we have learned from the table. Now see this class base. Okay, this is your base class which is having the private members. Let me change the color of this pen. Yellow. Yellow visible रहेगा. Okay. क्लास बेस, इसमें देखो प्राइवेट मेंबर्स कौन से, इंट ए फंक्शन ए. Protected members int b function b. Public members int c function c. Okay, now private mode में inherit करेंगे नई class. Child class inherited in a private mode from the base class. Now this child class is having its own members. Private में int x function x. Protected members of the child class int y function y. Public members of the class child are int z and function z. Okay, simple. Private protected public members base class के देखे हमने और private protected public members of the child class. But what is the actual structure of that new child class after inheritance is like this. Though we are just mentioning this thing, but the actual class is like this, the child class. See this child class. Now this child class, since it is inherited in a private mode, and we know that if you are inheriting the private mode, the protected and public members, they become private members of the new class. And hence, you can see here, कौन से protected और public members है आपकी base class के, B function B, int C function C.
तो ये सब प्रोटेक्टेड और पब्लिक मेंबर्स आगे चल के प्राइवेट बनने चाहिए क्लास चाइल्ड में, दैट इज द रूल। सो यस यू कैन सी हियर प्राइवेट में कौन कौन आएगा, उस चाइल्ड क्लास का खुद का प्राइवेट डेटा इंट एक्स फंक्शन एक्स, ओके। और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो इंट बी एंड void function b. So these are the protected members inherited from the base class which became private in this new class. Now see this, ये कहाँ से आया c और function c? So these are the public members which are inherited from the base class, लेकिन वो अभी यहाँ आपके private बन गए. So this is the actual structure of the child class. ओके इसमें प्राइवेट मेंबर सिर्फ इंट एक्स फंक्शन एक्स है क्या? नहीं, उसके पास बेस क्लास से मिले हुए ये भी फंक्शन है. इट इज लाइक you are not having your property, you are having some property handed over to you by your uh, granted to you by your father also, so you inherited that property, no? तो आपका पैसा प्लस मिला के आपके पेरेंट्स का, okay, so that money plus your money, that is the new thing, that new amount of money presently you are having, or at some point you will be having. ओके सो दैट इज द थिंग, चाइल्ड के पास सिर्फ उसका प्राइवेट ही डेटा नहीं रहता, उसे अपने पेरेंट क्लास से जो मिला है वो भी इनहेरिट करके, ओके, व्हाट यू कैन से जायदाद, राइट? सो दैट आल्सो is handed over to it. So that's why here it is written that what it get, protected members from the base class plus public members inherited from the base class, everything become private members of the new class because we are using which mode of derivation? Private mode of derivation. अच्छा अब इसके प्रोटेक्टेड मेंबर्स कौन रहेंगे? तो इसके प्रोटेक्टेड मेंबर्स रहेंगे वही जो उस क्लास में है, y फंक्शन y, int y, void function. What will be the public members of the child class? So int z and void function z. Okay. So this is how you can see these things when you will actually implement the program. Let us look at the protected mode of inheritance. तो उसके लिए पहले आपको ये याद होना चाहिए कि प्रोटेक्टेड अगर इनहेरिट करते हैं मोड में तो क्या होता है. तो प्राइवेट तो इनहेरिट ही नहीं होते. रही बात प्रोटेक्टेड मेंबर्स की, तो प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस में प्रोटेक्टेड और पब्लिक बेस क्लास के मेंबर्स दोनों प्रोटेक्टेड बन जाते हैं नई क्लास में. तो यहाँ हम देखेंगे फिर से क्लास बेस में वही मेंबर्स है, प्राइवेट में इंट ए फंक्शन ए, प्रोटेक्टेड इंट बी फंक्शन बी, पब्लिक इंट सी फंक्शन सी. चाइल्ड क्लास प्रोटेक्टेड मोड से इनहेरिट की फ्रॉम द बेस क्लास. इसके मेंबर्स देखते हैं, प्राइवेट इंट एक्स फंक्शन एक्स, प्रोटेक्टेड int y function y, and public int z function z. Now this is the actual structure of the child class. As you can see here, the private members of the child class are only int x and function x. Okay, क्योंकि ये तो इनहेरिट ही नहीं होते, तो ये इसी क्लास तक लिमिटेड है और ये उसके खुद के मेंबर्स यहाँ रहेंगे डेफिनेटली. Let us have a look at the protected members. जैसे कि हमने बोला कि protected and public members of the base class they become protected members of the derived class. इसलिए protected members of the child class will have ये आ जाएगा, ठीक है, int y function y उसके खुद के protected members plus protected members inherited from the base class. कौन से है protected members? ये है base class के, और public members कौन से base class में? c और function c. तो ये दोनों ही आगे चल के क्या बन जाएंगे? protected of the new child class. So yes, you can see these three things. Among this, ये उसकी खुद की और ये हुई है inherit. ठीक है. So what is there inside the public members? So public member will only contain this part, that is z and function z. The most simplest mode of derivation, public इतना सिंपल मोड है कि इसमें जो मेंबर्स बेस क्लास में है वही वो आगे चल के भी बन जाते हैं. ओके सो इन public inheritance mode, what happens is the protected members become the protected members and public members they become the public members. Okay, so let us have a look at this. Here यहाँ public चाहिए था. In public inheritance, protected members become protected
and public members of the base class become public members of the derived class. Okay. Okay, now see here, class base, again having private member int a function a, protected int b function b, public member int c function c. Child class, publicly inherited from the base class, private int x function x, protected int y function y, public int z function z. Now the actual structure of the class child is like this. प्राइवेट मेंबर्स में सिर्फ यही पोर्शन रहेगा int x and function x. Okay, the private members of that child class. Protected में क्या आएगा? This plus this. Okay, this plus this. So as you can see here, int y function y and int b function b, which is inherited from the base class. Then let us have a look at the public members. Public members में उस class के खुद के public members plus base class के public members. So public members inherited from the base class. So as you can see that पब्लिक मोड ये बहुत सिंपलेस्ट मोड है. इसमें जो मेंबर्स बेस क्लास में जैसे है वैसे ही वो आगे भी बनते हैं चाइल्ड क्लास में. तो जैसे आप देख सकते हो कि प्रोटेक्टेड मेंबर बेस क्लास के आगे भी प्रोटेक्टेड ही बनेंगे और पब्लिक मेंबर्स बेस क्लास के आगे भी चल के पब्लिक ही बन रहे हैं. तो जिस मोड में आप उसको मोल्ड करो दे गेट मोल्ड इनटू दैट. ओके, दैट इज द थिंग. Now we will start with the inheritance type. See, students, visibility modes is very important to be understood. Otherwise, that you won't be able to understand the different types of inheritance and the programs you will be performed. Okay. तो विजिबिलिटी मोड और एक्सेस स्पेसिफायर जिसे हम बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, ये आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है. टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, सिंगल, मल्टीपल, multi-level, hierarchical, hybrid. There are 5 different types of inheritance. Let us have a look at each one of them in detail with syntax, then what is the concept and what an example. Single inheritance. When a class inherits from a single base class, it is known as single inheritance. मतलब जब एक ही base class से एक ही नई class inherit होती है तो उसे single base class, single derived class, so it is known as single inheritance. As you can see here, from the class A, we have inherited class B. So where class A is known as a base class or superclass, and class B is known as a derived class or subclass. Okay, now this program is showing the single inheritance, but here we have used a very simple mode of derivation, that is public. मैंने most of the program जितने भी आपके टेक्स्ट बुक में भी दिए हैं ना, उन्होंने public mode of derivation ही use किया है. Maybe for simplicity they have kept it like this. Okay. लेकिन आपको मीनिंग सभी का पता होना जरूरी है. लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में मैक्सिमम जो प्रोग्राम्स दिए हैं सबने पब्लिक मोड ऑफ डेरिवेशन ही यूज किया है. तो पब्लिक मोड ऑफ डेरिवेशन बहुत सिंपल है, जिसमें बेस क्लास के प्रोटेक्टेड मेंबर्स प्रोटेक्टेड बन जाते हैं, पब्लिक मेंबर पब्लिक बन जाते हैं और प्राइवेट तो कभी इनहेरिट ही नहीं होते. ओके, सो पब्लिक मेंबर इज मोड ऑफ डेरिवेशन इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. So you can remember at least the public mode of derivation. Though it is necessary to understand each and every visibility mode, but in most of your programs given in the textbook, they have implemented the public mode of derivation. Look at this program, very simple. I have not, though they have given some complicated programs also, but I am keeping it very simpler for you so that you will understand the concept. Okay. क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम रख के ना आपको वो चीज समझ में आएंगी और फिर भले वो चीज मुझे समझ में आ जाएगी बट आप लोगों को नहीं समझ में आएंगी. तो इसलिए हम सिंपल, जितना सिंपल लेवल पे हो सकता है उसे उतना सिंपल करके इम्प्लीमेंट करेंगे. ठीक है प्रोग्राम में. अब यहाँ मैंने एक बिल्कुल ही सिंपल प्रोग्राम लिया है जिसमें मैं 2 इंटीजर नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करूंगी. उसमें से एक जो इंटीजर है वो बेस क्लास का रहेगा और दूसरा जो नंबर है वो डिराइव क्लास में रहेगा. और
ये आपको चीज ध्यान में रखनी है कि जब हम मेन क्लास में इनहेरिटेंस के जितने भी प्रोग्राम आप करोगे, तो मेन क्लास में ऑब्जेक्ट हमेशा डिराइव्ड क्लास का बनता है, बेस क्लास का नहीं। Okay? You create the object of the derived class because at the end which class you are writing, the derived class. So you have to create, and which class is having all the features, base class के भी और खुद के भी derived class. So you have to create the object of the derived class because derived class is having the control rights and everything. So that's why remember this thing, that we are going to create the object of derived class. Now see this example, hash include iostream using namespace std class b. Okay, as you can see in this program, this is the diagrammatical representation of this class. This is a program for single inheritance where I will inherit a new class D from the base class B. Okay, एक class, एक base class और एक derived class, single inheritance. Now see, class B having the public member int x and one more function void getx int a, which is just setting the value of x variable for the particular object, which will call the getx function. So what is the job of getx function? It will just assign the argument passed into the a x variable of that object. So void getx int a will be assigned to the x variable of that object. Class completes. Let us inherit a new class. So class D colon publicly from B. So class D is inherited publicly from class B. This is how we read it. इसमें हम एक वेरिएबल लिया, हमने प्राइवेट ही लिया बिकॉज आगे चल के हमें इसे इनहेरिट नहीं करना है, सो वी कैन कीप इट अप टू द दैट क्लास ओनली. सो प्राइवेट वेरिएबल लिया है int y and then void get y int b. Okay, और let us make it more simple. फिर आप बोलोगे इसको कि public. Let us make everything accessible to everywhere. ठीक है. Now see this. Class D publicly inherited from B, which is having the two public members. One is int y, integer y, and second is void get y with one argument. What get y function will do? It will just set the value of variable y with the past argument. So B की value जो है वो copy हो जाएंगी into the variable y of the object, which will call the get y function. Now let us write one more function inside the class D. See, what is this product function will do? It will calculate the product of x and y. अब आपको यहाँ पे ये चीज समझनी है कि यहाँ x कैसे लिखा डायरेक्टली. तो x इसलिए डायरेक्टली लिखा है क्योंकि जैसे ही आपने क्लास डी इनहेरिट की पब्लिक मोड में फ्रॉम बी, तो क्या हुआ, इसके सारे पब्लिक मेंबर्स इसके पब्लिक मेंबर्स बने. ओके, और इसी वजह से ये क्लास जो है या इसका कोई भी मेंबर फंक्शन इस चीजों को, इस वेरिएबल्स को, पब्लिक मेंबर्स को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है. इसलिए मैंने यहाँ x डायरेक्टली लिखा, ठीक है, जो कि इसका पब्लिक मेंबर है क्लास b का. तो आई कैन डायरेक्टली राइट x इनटू y. y तो उसका खुद का ही पब्लिक मेंबर है, तो वो लिख ही सकती है. एंड देन प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू दिस शुड बी डिस्प्ले. तो अभी तक हम जो बोल रहे हैं ना कि पब्लिक प्राइवेट बनता है, प्राइवेट प्रोटेक्टेड बनता है, ये आपको ये समझने के लिए, क्योंकि आप ऐसे कैलकुलेशन जब करोगे ना, तो आपको ये चीज समझनी जरूरी है कि किसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, किसे नहीं लिख सकते हैं. ओके, that will be understood when you will learn that table or when you will be able to understand the meaning of visibility mode. फिर कौन कहाँ क्या बन जाता है. तो फिर ये अगर आपको वो चीज नहीं पता होती ना कि x को हम यहाँ एक्सेस कर सकते हैं, तो आप ये x यहाँ नहीं लिख पाते थे, या आपको मीनिंग ही समझ नहीं आता कि x और इंटू वाई हम लिख भी सकते हैं. अब ये
हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि इसके पब्लिक मेंबर्स इसके भी पब्लिक बन जाते हैं डी में। क्यों? क्योंकि पब्लिक मोड ऑफ डेरिवेशन यूज हुआ है, और पब्लिक मेंबर्स हमें पता है एक्सेसिबल टू ऑल फंक्शंस रहते हैं, इसीलिए प्रोडक्ट फंक्शन भी एक्स को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। दैट इज द थिंग। इसीलिए मैंने बोला कि टेबल समझो, पहले वो एक्सेस मैकेनिज्म समझो, फिर टेबल समझो, और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस समझो। मतलब कौन कहाँ आप किसी प्रोग्राम में कैसे यूज कर सकते हैं या कोड में कैसे लिख सकते हैं। एंड देन वी विल फिनिश द क्लास। तो यहाँ हमारी क्लास एंड हो जाएगी। एंड देन वी विल राइट द मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में जैसे कि मैंने बताया कि हमेशा हम नई क्लास जो हमने इनहेरिट की है दैट इज क्लास डी, उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सो क्लास डी का ऑब्जेक्ट बनाया है डी1। फिर डी1 जो ऑब्जेक्ट है, कैन इट इज इट एबल टू एक्सेस द पब्लिक मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास बी? ये वैलिड है क्या स्टेटमेंट? कोई बता सकता है क्या डी1 डॉट गेट एक्स कैसे वैलिड है? एनीवन फ्रॉम यू? क्या ये स्टेटमेंट वैलिड है या इनवैलिड है? क्या ऐसे डी क्लास का ऑब्जेक्ट डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है क्या इसको, क्लास बी के पब्लिक मेंबर फंक्शन को? यस, एनीवन फ्रॉम यू प्लीज आंसर। अगर ये सही है तो क्यों सही है, अगर ये गलत है तो क्यों गलत है? यस, समवन आंसर। यस, एम आई ऑडिबल? आहे ना, मी ऑडिबल बोला ना, कोणी बोला? Yes, अच्छा ma'am. है। किसने बोला? किसने आंसर दिया अभी? व्हाट इज योर नेम? ओके, Dhanashri. धनश्री बजाज। सो व्हाई इट इज व्हाई इट इज वैलिड? कैन यू एक्सप्लेन ये स्टेटमेंट वैलिड क्यों है? क्या कोई भी नई क्लास का ऑब्जेक्ट पब्लिक मेंबर को बेस क्लास के डॉट ऑपरेटर से एक्सेस कर सकता है? मुझे ये चीज पता है कि बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ तो बेस क्लास के ऑब्जेक्ट अपने पब्लिक मेंबर्स को डॉट ऑपरेटर से एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन ये तो डिराइव क्लास है, फिर डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे एक्सेस कर रहा है पब्लिक मेंबर फंक्शन को बेस क्लास के? D1 is the object of class D, okay, derived class D, and getX is the public member function of the class base class B. So how is it possible? Anyone can explain? कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता? बोलो गलत हुआ तो भी चलेगा, फिर मैं ही बकबक करूँ क्या? See, I will explain the reason. This is a completely valid statement. Why? Because of the table. The table says public members of the base class become public members of the derived class if you inherit them in the public mode, and hence the object of the derived class can directly access the पब्लिक मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास। क्योंकि इसके पब्लिक मेंबर्स यहाँ आके पब्लिक ही बन गए ना, तो वो एक तरह से यहाँ के पब्लिक मेंबर्स है। तो पब्लिक मेंबर तो आपको पता ही है कि ऑब्जेक्ट डायरेक्टली एक्सेस करता है, जैसे D1 डॉट प्रोडक्ट, इसमें कुछ गलत है क्या? क्लास डी अपने खुद के मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर रही है, कुछ गलत नहीं है। और ये जो सब है पब्लिक मेंबर्स, ये यहाँ आके सब पब्लिक बन गए। ओके, बेस क्लास के नई क्लास में जाके पब्लिक मेंबर्स बन गए, इसलिए इस क्लास का ऑब्जेक्ट किसी भी पब्लिक मेंबर को अपने डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है विद द डॉट ऑपरेटर। इसीलिए अगर हम D1 डॉट गेट एक्स 5 लिख रहे हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है। ठीक है, सिमिलरली यू कैन राइट द D1 डॉट गेट वाई। अब गेट वाई तो आपको इसी बॉडी में दिख रहा है डी क्लास के, तो आप बोलोगे हाँ ये सही है और ये गलत है, तो ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको इनहेरिटेंस के रूल्स पता होने जरूरी है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। इससे क्या होगा? D1 ऑब्जेक्ट जैसे ही आपका क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, उसके लिए कितने वेरिएबल्स क्रिएट हो जाएंगे?
x and how many y, टू वेरिएबल्स क्रिएट होंगे। ये दो वेरिएबल्स कहाँ से आ गए, क्योंकि ये मिला ना इसको, ये भी तो इसका पब्लिक मेंबर जो था बेस क्लास का, ये भी इधर आके पब्लिक मेंबर बन गया। इसलिए जब डी क्लास का डी वन ऑब्जेक्ट बना तो उसके दो मेंबर्स बनेंगे, दो वेरिएबल्स अलोकेट होंगे एक्स और वाई, जिनकी वैल्यू अभी कुछ इनिशियलाइज नहीं हुई है। जैसे ही आप डी वन डॉट गेट एक्स फाइव लिखोगे तो ये फंक्शन इन्वोक होगा, जिससे एक्स में वैल्यू फाइव असाइन हो जाएंगी। जैसे आप d1 डॉट गेट वाई 10 एनकाउंटर करेंगे स्टेटमेंट, तो y की वैल्यू, ये फंक्शन इन्वोक होगा और y की वैल्यू हो जाएंगी 10। जैसे ही हम d1 डॉट प्रोडक्ट कॉल करेंगे तो ये कैलकुलेशन परफॉर्म हो जाएगा। सो 5 इंटू 10 एंड द आंसर प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 50 विल बी प्रिंटेड। Output of this program will be product is equals to, this is the answer of this program। तो आपको प्रोग्राम का फ्लो पता चलने के लिए, या फिर कौन किसे असाइन हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सारी चीजें आप लोग समझ सकते हो कि विजिबिलिटी मोड कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी प्रोग्राम में। विदाउट लर्निंग द or understanding the visibility mode concept, you won't be able to execute or understand a single program of inheritance. So please have a क्या बोलेंगे, मीन्स केयरफुली रीड दैट कंसेप्ट। ओके, प्रीफिक्स लिखते हैं। Okay, now what is the time? 12:51. Okay, we will start with the multi-level inheritance in the next class. या फिर बता दूं अभी? Okay, in the next class we will start multi-level inheritance because its program is quite longer. It will take time. So अभी किसी को कुछ डाउट है तो आप लोग पूछो पहले। Is anybody having doubts? Please ask. Yes. Yes. Please ask your doubts. See, you No, have to. हाँ. no Yes. doubt, ma'am. नो डाउट, सब समझ में आ गया, फिर आंसर क्यों नहीं किया? यू कुड हैव आंसर्ड ना। देखो गलत भी बोलो, लेकिन मुझे ये समझ में आना चाहिए कि आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं, बिकॉज यू आर फ्रॉम द मे बी इलेक्ट्रॉनिक बैकग्राउंड। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बच्चे मे बी दिस इज प्रोग्राम ओरिएंटेड सब्जेक्ट, सो मे बी यू आर इग्नोरिंग सम ऑफ द थिंग्स। और वाइल डिटेल्ड जो स्टडी होती है एक, वो मुझे नहीं लग रहा कि आप लोग कर रहे हो, आपके आंसर्स पढ़ के, जैसे आपने सेशनल में परफॉर्म किया वो देख के। सो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू whether you actually able to understand these things or not. See, understand the mechanism, understand table, and you will understand everything. That is the case. अगर आपको प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक का मीनिंग बहुत अच्छे से पता है तो इनहेरिटेंस का यूनिट आपके लिए कुछ नहीं है। अगर आप उसी में कंफ्यूज हो कि ये यहाँ नहीं होता वो वहां नहीं होता, तो फिर आपके लिए इनहेरिटेंस इज वन ऑफ द टफ यूनिट फॉर यू। सो if you are able to understand these three things, everything is easier for you. Okay, so please go through those table। मतलब पहला जो प्रेजेंटेशन है मैं आज शेयर करूंगी, ये आपका सेकंड प्रेजेंटेशन है यहाँ से। तो ये जो पहला है इनहेरिटेंस का बेसिक्स, ये मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। प्लीज गो थ्रू दिस। ओके, now you may leave the meet, mark your attendance and leave the meet। हेलो मैम। यस। वो मेरे क्लासरूम में ओओपी का लेक्चर ही नहीं आ रहा है। काय नाव आहे तुझं? नकुल नकुल माकोडे। माकोडे। हाँ, एक मिनिट, म्हणजे तू कुठल्या सेक्शनचा आहे? मी ई सेक्शन थर्ड ग्रुप सेक्शन बी चा आहे की ए चा आहे? ए सेक्शन। सेक्शन ए। हाँ,
फुल माकोड आहे. नाही तुझं तर नावच नाही आहे. सेक्शन येत आहे तू. हो मॅम. सेक्शन ए नको. येतच नाही मॅम ते. आधी तर नव्हतं तुझं. आधीने केले होते मॅम मी सगळ्यात पहिले. कुठे बी मध्ये. नाही ए सेक्शन. तुझं तर नावच नाही आहे आणि हे ग्रुप जे आहे ते तुमच्या क्लास टीचरनी बनवलेले आहे. यामध्ये मी नाही ऍड केलाय. ठीक आहे मी ऍड करेन तुला. तू असं कर, माझा नंबर आहे ना, हो तर प्रायव्हेटली तुझा ईमेल आयडी मला पर्सनली सेंड कर. ठीक हा आहे मॅम. नंबर. इन्स्टिट्यूशनल आयडी. हा हो नंबर कशावर ग्रुप वर नम आहे ना. ग्रुपवर आहे ना नंबर. आता जो मेसेज टाकलाय ना मी, जॉईन द हो. लेक्चरचा, हा तो माझाच नंबर आहे. ओके ठीक आहे. जॉईन द लेक्चर. ठीक आहे. हा हा.